then reads mane kono ketara type of reads achi. Okay, so then this will be the end of our chapter. Okay, reads kono supreme reads code achi. Reads kono padiba. Supreme Court hochi under Article 32 of High Court ko under 226 is reads power diye. Okay, reads asuchi ko to English law. Okay, Britain ru read code as Britain. Reads mane kono Supreme Court will give you order. Okay, reads ra manifesto bolte. Reads mane kono, for example moro today rights violate hala, I go to Supreme Court will give you order. Okay, or Supreme Court will give you I would कौन आप है नहीं better word कि बस यही मन रखो Supreme Court जो order दूची. Okay, कि माने इधर हमें पढ़िबा केते टाइप रो रीड्स अछि कि मोर ए राइट्स वायलेट होची. Supreme Court will give order to the state to ensure this particular right to this person. Okay, this is called as writ. Court asla hame padle English law ru aschi. Okay, writs are extraordinary remedies to uphold the rights and liberties. Mu kon कहली मोर जदी किछ ओटे राइट वायलेट हेछि आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट कोन कहबो गवर्नमेंट को यार ए राइट इंश्योर करो. Okay, so there are extraordinary remedies to uphold the rights and liberties of people. एटा ब्रिटिश पीपल लिखाइ छै कोन मे एटा रीड सेडु आस्थिला. Okay, read jurisdiction of Supreme Court differs from the High Court in three aspects. हमें पढ़िले तमर केवल फंडामेंटल राइट वायलेट हेल तुम सुप्रीम कोर्ट जाय परिबो. अदर किछि भी राइट्स वायलेट हेल तुम हाई कोर्ट भी जाय परिबो. एटाला गोटे डिफरेंस. सेकंड कोन सुप्रीम कोर्ट को तुम जाय परिबो तमर जदी रीड वायलेट हेछि कंट्री रो को भी पार्ट रे तुम देशर कोड भी रहउछो तमर रीड्स वायलेट हला तुम सुप्रीम कोर्ट जाय परिबो. बट स्टेट को तुम जाय परिबो केवल जदी सेही स्टेट रे तमर रीड्स वायलेट हेछि. फॉर एग्जांपल यू आर ए पर्सन ऑफ ओडिशा, your writ is violated, you can go to Supreme Court, but you cannot go to Andhra Pradesh High Court. You can go to either Supreme Court or Odisha High Court. Okay, this is one of the difference. Third difference kono, since it is exclusively for Supreme Court cannot deny. जदि तमे आर्टिकल 32 अंडर रे तमर किछि फंडामेंटल राइट रो वायलेशन हेछि तमे सुप्रीम कोर्ट गलो, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई. इट इज बाउंड, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव रूल्स और सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू हियर योर व्हाट प्रॉब्लम. पर तुम जे हाई कोर्ट गलो, हाई कोर्ट मना भी कर दे पारे कि कहि पारे जे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जा. बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई. ओके, may not refuse to exercise its in this jurisdiction. आ कोन 500 प्रकार रीट अछि हला. हेबियस कॉर्पस एटा तुम शॉर्ट रे हम जस्ट कहि देबी. हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी एंड क्यू वारंट हला. फर्स्ट हम देखियो हेबियस कॉर्पस माने कोन. जस्ट मीनिंग को अछि पैराग्राफ तुम नीचे पढिबो, जस्ट मीनिंग बुझो. टू हैव द बॉडी ऑफ. Okay, it checks the legality of the detention. For example, habeas corpus the situation ta बुझो नरा मते illegally detain कराई छै, पुलिस मते detain कर दै छै. मु कहू जे मोर डिटेंशन होची इलीगल, मते लॉ अनुसार नियम अनुसार डिटेन कराई नै. ओके, आर्बिट्री पावर यूज करके डिटेन कराई छै. देन सुप्रीम कोर्ट विल कॉल द स्टेट, कॉल द पुलिस. ओके, एंड विल चेक कि मोर जो डिटेंशन हेछि सेटा लीगल ना इलीगल. जदि इलीगल हेछि से पुलिस कहबो जाकु छाड़ो. ओके, दैट इज कॉल्ड एज habeas corpus. I will file a appeal in Supreme Court by filing habeas corpus writ petition. ओके, बुझ पालो writ petition तो कोन writ petition माने मु जदि भाबु जे मोर डिटेंशन इलीगल हेछि, I will go to the court, I will file a habeas corpus writ petition. That writ petition will be decided by the Supreme Court to see whether my detention is legal or illegal. Right? Second, सिंधुची mandamus writ petition केतल तुम फाइल करि परिबो. यार मीनिंग होची वी कमांड. ओके, जदि गोटे लोक ठीक रे तार ड्यूटी करूनी, एडा सब देखो स्टेट अगेंस्ट रे, दीज आर नॉट फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स. जदि गोटे लोक पब्लिक ऑफिशियल अछि जे कि ठीक रे तार ड्यूटी करूनी, ओके, कि काम करिया को मना करूची या तो ता काम से ठीक रे करूनी, देन कोर्ट कैन आस्क हिम टू डू हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली. There this mandamus writ petition is applicable.
ओके फॉर एग्जांपल तमे अच्छो गोटे पब्लिक पीएसयू रे हला तमे धरो काम करूछो ओएनजीसी रे ओके यू आर ए मैनेजर समथिंग आइदर यू आर रिफ्यूज टू वर्क गिव ऑर्डर फॉर एग्जांपल किछ गोटे कियोस हे गला तमे सेठी ड्यूटी रे अछो तमे मना करूछो आई विल डायरेक्टली गो एंड फाइल ए रिट पिटिशन अंडर दिस मैंडेमस ओके फ्रॉम ओएनजीसी साइड then court will tell you to do your duty properly okay if you are not doing your duty properly or if you are failed to do your duty properly then court can ask you to do your duty properly that is called as mandamus okay just meaning बुझो बस meaning बुझले तमरो तमे गोटे दी थरा पढियो ना मन रहियो या साइड रे लिखि दियो तार मीनिंग ता कोन प्रोहिबिशन माने कोन देखो मीनिंग रे जणा पड़ुची कोर्ट किछि ओडे प्रोहिबिशन लगौची माने किछि ओडे जिंस करिया में मना करूची कोन करिया में मना करूची एडा किए इश्यू करिवो हायर कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट इश्यू करि परिवो हाई कोर्ट इश्यू करि परिवो लोअर कोर्ट ओके सो दिस विल बी इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और ए ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर माने द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction or uprising a jurisdiction that is does not possess for example एडा छाड़ कोन लिखा है बुझो तमे कोन धरो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रे ऑर्डर देला हाई कोर्ट को पर्टिकुलर केस रे डील करूची हला सुप्रीम कोर्ट देखिला हाई कोर्ट जो डील करूची एक्चुअली एडा हाई कोर्ट रो jurisdiction रे नाही फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट भीतर किछ ओडे कॉन्फ्लिक्ट हेची जोडा कि एक्सक्लूसिवली इन द डोमेन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेंटर स्टेट भीतर कॉन्फ्लिक्ट स्टेट कोर्ट हाई कोर्ट डील करि परिवनी ओके जदी हाई कोर्ट ए केसटा जण जाके हाई कोर्ट करछ हाई कोर्ट ता ऊपर डील करूची सुप्रीम कोर्ट देखिला जे एटा हाई कोर्ट रो jurisdiction नहीं नाही तो सुप्रीम कोर्ट कोन कहबो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को प्रोहिबिट करिवो ओके कोन करिवो जे तमे जो जिंसडा ऊपर डील करूछ यू आर इट इज नॉट अंडर योर jurisdiction आइदर यू आर एक्सीडिंग योर jurisdiction तम jurisdiction नाही स्टिल तमे ता ऊपर डील करूछ ओके सो ताकू कहउछन प्रोहिबिशन बुझबरला हायर कोर्ट सबले लोअर कोर्ट को ऑर्डर दबो जे जो भी तमे जिंस ऊपर डील करूछ तमे तम jurisdiction बाहर जाके डील करूछ ओके और तम jurisdiction सेटा नाही तमरो से माने जो तमरो जो jurisdiction আছে से भीतर सेटा नाही देन ताकू कहउछ प्रोहिबिशन ओके तीनटा में पड़ले हेबियस कॉर्पस इलीगल डिटेंशन पाई तापर पड़ले हम कोन मैंडामस कोन करूची जण जदी तार ड्यूटी ठीक रे करूनी ताकू कोर्ट कहउछ करिया पई मैंडामस थर्ड पड़ले में प्रोहिबिशन कोन हाई अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर दोची जे तमे जो जिंसडा ऊपर डील करूछ से तम jurisdiction नाही फोर्थ होची कोन सर्शियरी माने कोन टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड ओके एडा भी कोन हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहबो या तो ट्रिब्यूनल को कहबो आइदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद द लेटर माने टू द ट्रिब्यूनल और द कोर्ट to itself or to squash the order of the letter in the case एडा कोन एडा टू जस्ट टिके डिफरेंस देखो एडी कोन हला हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहतला जे एडा तम jurisdiction नाही तमे करनी एडी कोन करिवो जदी ओडे केस पेंडिंग अछि लोअर कोर्ट रे सेडा किछि सुनानी होनी या तो तांका jurisdiction नाही जाबी हायर कोर्ट कोन करिवो लोअर कोर्ट को ऑर्डर दबो जे ए केस टाको तमे हम को पठा हम डील करिवो ओके आउट केस कोन जदी ये किछि ओडे ऑर्डर पास कर दैछि लोअर कोर्ट जोडा कि एक्चुअली माने निजो jurisdiction बाहर बाहर जाके पास कर दैछि ऑर्डर नै ताको हायर कोर्ट कोन करिवो स्क्वाश करिवो कहबो कि तमे ए ऑर्डर पास करिया पे एलिजिबल ओके तो डीडा केस गोटे होछि तांका पाखरे जदी कि केस पेंडिंग अछि याको बाकू पठे दबो जदी समान निजो jurisdiction बाहर जाके कि ऑर्डर पास करछन ताकि से स्क्वाश कर दबो ओके मान ताकु से इनवैलिड कर दबो एडा होछि सर्शियरी हला एति होछि तार मीनिंग दैट्स इट फोर्थ चारटा पढले हेबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सर्शियरी लास्ट होछि हमर क्यूरेंट माने कोन बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट ओके it is issued by a court to inquire into the legality of the claim of a person to a public office okay तमे जदी गोटे जगह रे गोटे पब्लिक ऑफिस से काम करूछो स्टेट को छि तमे इलीगल वे रे काम करूछो okay then court will check okay whether where you are working okay whether you are working or you have joined that post illegally or legally for example हमर तुमको सिंपल लैंग्वेज रे बुझा पे कहूची हमर जो एग्जाम वाला करप्शन होची गोटे पिला पैसा देके जाई पाई जाईची जॉइन हे जाईची ता अगेंस्ट मु फाइल करली क्यूरेंट ओके रिट पिटिशन
तो कोर्ट चेक करिवो ये जो जॉइन हेची ये लीगल प्रोसेस रे प्रॉपर्ली एग्जाम दे की प्रॉपर प्रोसेस रे जॉइन करछि ना इलीगली जॉइन करछि जदि से इलीगली जॉइन करछो ताको बाहर कर दो बुझलो सिंपल मीनिंग बुझिया एतकी दरकार तुम एग्जाम रे कोन होबो ना टेबल आस्थियो धर एपडे पांचटा जागा देछि एपडे तार पांचटा कर मीनिंग देछि इफ यू जस्ट नो द मीनिंग देन विदिन अ सेकंड यू कैन डू ओके तो पांचटा रीड करला ऑलमोस्ट चैप्टर सरला आउ तो किछ आर्म फोर्सेस पय एक्सेप्शन अछि एडा तुम दरकार नै आउ एडा टिके देखियो एडा किछ दरकार नै एडा तुम बुझी परिबो अपन अछि मार्शल लॉ फंडामेंटल राइट दरकार नै प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी हम देखिले हला राइट टू प्रॉपर्टी प्रेजेंट पोजीशन कोन 44th अमेंडमेंट एक्ट रे को बाहर कराई छी 1978 रे हला एबे आर्टिकल 19 अंडर 1 अंडर थिला एबे अछि आर्टिकल 300 ए रे प्रेजेंट पोजीशन आर आर्टिकल 300 ए रे अछि हला आउ पार्ट 12 रे अछि आउ एडा होछि गोटे हमर लीगल राइट ओके इट इज ए लीगल राइट और ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओके एंड नॉट ए फंडामेंटल राइट and it is not the part of basic structure of the constitution that was our present position then these are exceptions not required na criticism वगैरह कुछ दरकार नहीं that's it that is all जल्दी कार किसी डाउट अछि पचारो then मु 8-10 टा क्वेश्चन रखिछि क्वेश्चन कर दवा ओके जल्दी कार किसी डाउट अछि पचारो अदरवाइज विल गो टू द क्वेश्चन okay we'll go to the question first सर जो फीचर्स जो 9 नंबर पे ठीक है जो फीचर्स है फंडामेंटल राइट 9 नंबर पॉइंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट रो 9 नंबर पॉइंट गोटे मिनट features of point number 9 okay the scope of operation is limited by article 31A being the law providing acquisition of the state article 31B of certain acts regulation including 9 schedule and 31C देखो एउडा होची एक्सेप्शन केस है देखो मु तुम गोटे बुझो आर्टिकल 31C कोन होची हमें कोन कहले आ ऊपर कोन पढले जदी देखो ए ऊपर कोन हम पढले ऊपर पढ़ले ना इधर पढ़ले हम उड़ जारे पढ़ले ना कि जदी तमे को भी सेंटर लॉ बनौछि जदी से को भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करूछि देन सेटा को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करि परिबो हां नहीं हम पढ़ले यस सर आर्टिकल 13 हां आर्टिकल 31 कोन कहूछि आर्टिकल 31 सी कोन कहूछि सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स माने जदी धरो तमे गोटे लॉ आनुछ जो थरे कि तमे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करबा में किछो लॉ बनो फॉर एग्जांपल हमरे बे आसीबो जो कोन आर्टिकल 44 कोन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड राइट जदी एबे धरो सेंटर आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करबा में किछो लॉ आनिबो okay uniform civil code को implement करबा में किछो लॉ आनिबो some people will say it violates our fundamental right of religion for example any religion रो क्योड लोक जीवो तब के जो ईसीसी गवर्नमेंट आणुची ये मोर फंडामेंटल राइट टू रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 को वायलेट हो हला देन कोन हो एठी से लॉ को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करिवो ना अलाउ करिवो दैट इज आर्टिकल 31C आर्टिकल 31C कोन कहूची जदी सेंटर किछ लॉ आणुची जे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करबा में अणायची या तो एग्जीक्यूट करबा में अणायची ताकू तमे फंडामेंटल राइट को वायलेट करूची बोली कहि कि नल एंड वॉइड करि परिबो नाही बुझि पारलो दैट लॉ विल बी सेव्ड अंडर आर्टिकल 31C अदरवाइज व्हाट अदरवाइज तमे कहि परिबो ना जे ए जो लॉ आसी फंडामेंटल राइट वायलेट करूची ताकू नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जाओ बट ये कोन करूची डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्टिव करबा में अणायची इट मे वायलेट द फंडामेंटल राइट बट इट इज टू इंप्लीमेंट द डीपीएसपी
So in that case, to save that law, Supreme Court will allow that law under Article 331C. ବୁଝିପାରିଲ ସେମିତି 9 schedule ରେ ଆମର ଯେତେ କେସ୍ ଅଛି ଯେତେ ଆମେ ଆକ୍ଟ ବନେଇକି ତମେ 9 schedule ବିଷୟରେ I don't know whether you know or not 9 schedule ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟ ପକା ହେଇଛି ଯାହାକୁ କି ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ର ବାହାରେ ରଖା ହେଇଛି 9 schedule ରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଜୁଡିସିଆଲି ରିଭ୍ୟୁ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆଣି ପାରିବ ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ cannot review those acts or those provisions ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 9 schedule ରଖା ହେଇଛି ଓକେ तो आर्टिकल 31B सेव करिया में रखा है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल अदरवाइज इफ देयर इज ए जुडिशियल रिव्यू मे बी देयर आर सो मेनी एक्ट्स और लॉज दैट आर अंडर 9 शेड्यूल कैन गो एंड डिक्लेयर एज इनवैलिड तो ताकू वैलिड करिया पई ताकू इनवैलिड डिक्लेयर न होवा पई ताकू सेव करिया पई आना है आर्टिकल 31B okay there are exceptions same similar thing with article 31A saving of laws providing for acquisition of estate ओके गवर्नमेंट किसी स्टेट को एक्विजिशन करया पई तमे सेट जे कहि परिबो मोर राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हे गला या तो मोर राइट टू इक्वालिटी वायलेट हे गला सेव करया पई आर्टिकल 31A ऑन है बुझ परला सो दे आर टू सेव सर्टेन एक्ट्स व्हिच आर इन अदरवाइज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स क्लियर Yes, sir. okay now we'll go to the question already 1.5 hour is over okay so question number 1 tame message karo okay I think lot of people has messaged right to privacy these are easy okay message karo yes article 21 correct यार सब तुमको पीडीएफ माने कोन वीडियो मिल जिवो सो डोंट वरी ओके वी गो लिटिल फास्ट एटा इजी भी तुमको बेसिकली टॉप क्वेश्चन पचारनी Question number 2. Which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? Right to equality. Type करो. Right to equality. कितना number article? 18, sir. 17. Article 17. Okay. See, don't try to be fast. Try to be correct. Okay. In prelims, you should not try to be fast. You should be try to be always correct. जल्दी जल्दी करिया चक्कर रे ना तमे केबे भी भूल करिवनी. Okay. तुमको prelims रे टॉप करियार नहीं कि फास्ट होवर नहीं. You have to qualify. Just remember. केबे भी इजी क्वेश्चन पढ़ी बोली भाबी कि बहुत तर करिवो ना सेरा मैक्सिमम टाइम देखियो भूल जाए. I have done this mistake so many times. Okay. So don't do it. Always be calm, even if it is very very easy. Just do it calmly. तुमको से 2 मार्क आनियार अछि +2. तुमको -0.66 करियार नहीं. Okay. And you know the value of this -66. पिला माने 0.01 मार्क रे भी प्रीलिम्स फेल करि होछन. Okay. So be careful. Question number 3. Which of the following are regarded as the main features of rule of law? The rule of law पढ़िले बुझे कि तुम what is rule of law, what is equality before law. So people are C or B, huh? Let's see C or B. C B with confused. So A out mostly language are okay. Now we check. जो मैंने पढ़ुचा परी के आंसर दियो. I am just explaining. हला. देखो rule of law माने कौन? Law will rule. Simple language रे बुझले. Law will rule. No individual will do. तो मेरा बुझे फिली. Means what? First option goes. It is a limitation of power. Is it a limitation of power or not? Yes, it is a limitation of power. Otherwise what? Any individual will
put his rules and regulations. Okay, individual माने कौन particularly government काम करूँ जल्दी लिमिटेशन न रहिबो गवर्नमेंट ता मन इच्छा किछि भी रूल्स रेगुलेशन लगे क्या भी किछि करियो तो एटा कोन करछि गवर्नमेंट लिमिट करछि लिमिटेशन ऑफ पावर ऑन द गवर्नमेंट सो वन इज करेक्ट इफ वन इज करेक्ट फास्ट तो हमर बी गला राइट जो माने भी बी करियो देखो लिमिटेशन ऑफ पावर इफ इट इज करेक्ट देन तुम्हारा बी आंसर इटु गला एलिमिनेट हल ऑप्शन बी तीन टाइप से पढ़ा हम सेकंड देखिए हम इक्वालिटी बिफोर लॉ हम एटा स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ी थिले इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ राइट चैप्टर रे पढ़ी थिले हमें तो 2 इज करेक्ट मींस 1 एंड 2 इज करेक्ट माने ए ऑप्शन टा भी गला ओके दिस इज हाउ यू एलिमिनेट ऑप्शन ए भी गला तो रहला कोन ऑप्शन सी आउट इथरे भी 1 एंड 2 अछि इथरे भी 1 एंड 2 अछि इथरे 4 भी अछि इथरे 4 भी अछि तो 4 हमको चेक भी करियार नहीं हला 4 सेमी भी करेक्ट केवल हमको चेक करियार अछि ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 कोन बुझ पीपल्स ऑप्शन सी कोन बुझ पीपल्स रिस्पांसिबिलिटी टू द गवर्नमेंट is it people's responsibility to the government or it is government's responsibility to the people just think government responsibility to people. हां लोकंगर responsibility government रे नहीं government responsibility towards the people right or not जहाँ भी फंडामेंटल राइट हम पढ़िले दे आर रेस्ट्रिक्टिंग गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल बट शुड नॉट डू ओके तो इट इज जस्ट रिवर्स ସେଥିପାଇଁ ऑप्शन 3 अब तमरो भूल आंसर विल बी सी जो माने भी बी देइतलो जस्ट सी हाउ यू कैन एलिमिनेट तमे जानिलो वन ऑप्शन तमरो ठीक होची तमरो एठी हबा कथा नहीं बी ओके तो सब जिंसर आंसर तमे डायरेक्ट जानिबोनी and lot of question you will solve through elimination तो प्रैक्टिस करबा टेस्ट सीरीज रे एबे भी मु तुमको पढेला वाली सिखेबी प्लस हमें तो टेस्ट सीरीज जानिया यू हैव टू प्रैक्टिस एलिमिनेशन टेक्निक प्रॉपर्ली ओके देन ओनली यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स तुम डायरेक्ट आंसर जानि प्रीलिम्स क्लियर कर परबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following are envisaged by right against exploitation in Constitution of India? Okay. Right against exploitation. First ever super रे भूल करनी ओके everybody is typing see it is very easy also okay कौन थिला हमरो एक्सप्लॉइटेशन रे we should not exploit trafficking we should not do trafficking and exploit human beings and we should not exploit children okay so untouchability भी हबोनी and interest of minority सेडा भी हबोनी एटा होची आर्टिकल 17 एटा होची interest of minorities केते आर्टिकल 29 education now our culture okay तो तमे बोला 2 and 3 the answer will be 1 and 4 next which article of the constitution of India safeguards one's right to marry persons of one's choice एटा तमरो आई थिंक 19 या तो 2020 रो यूपीएससी क्वेश्चन एटा सबोडा यूपीएससी क्वेश्चन बट एटा 2000 आई थिंक नहीं से तो 20 रो क्वेश्चन दिस इज आर्टिकल 21 यस समस्त और ठीक अछि नेक्स्ट in the context of India which one of the following is correct relationship between rights and duties rights and duties that question is here.
It be easy. Okay. Rights are correlative with duties. Mostly answer दूसरा A है ना. Rights are correlative with duties. Okay, এটা হচ্ছে correct answer. But এবারে কোন আমি ভুল দেখলাম. Rights are personal and hence independent of society and duties. Okay, rights are never independent of duties. Always remember, rights are you enjoy the rights at the same time you also remember what is your duty. Okay, so right cannot be independent of duties. Okay, if right is independent of duties, then you will create chaos in society. Okay, so এটা ভুল. Right, not duties are important for advancement of society. Okay, duties are also very very important for your own development and for the development of the country. Okay, जो हमारा duty ଅଛି ना ওটা ଅଛି scientific temper. এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট তোমার advancement of personality. Okay, so এই অপশনটা কি ভুল যাব. Duties not rights are important for stability of the state. Both are important. Okay, you cannot say duty is important or right is important. The answer will be A. Next, 7. If a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequences of it? এটা আমি যে পূর্ব পড়িଥିଲି আগ দিন. ওকে, তার এটা কোশ্চেন. ইট ইজ নট ফ্রম ফান্ডামেন্টাল রাইট চ্যাপ্টার, বাট তুমি কইছিলি শিডিউল পড়িব. ওকে, should remember what is fifth schedule. It will be both easy question. Okay, because other options are not at all related to schedule also. This should convert area into union territory. এটা को schedule नहीं नहीं. Okay, special category state. এটা भी को schedule नहीं नहीं. Okay, and create a local self government body in that area. This is also not fifth schedule. This is which schedule? Co schedule. Option B is co schedule. Local self government is related to which schedule? 11. So 11 11 is is for 12. rural. 12 is for urban. Okay. Rural local government ପାଇଁ ହଉଛି 11, urban ପାଇଁ ହଉଛି 12. Number 8. In India, judicial review implies what? ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି what is judicial review? Most of you माने तमे समस्ते बहुत जण एक्चुअली ठीक आंसर दउछ त मते लागुछ जे तमे एक्चुअली पढि के आछो. जदि जी आंसर दोनी या तो भूल दोछि कि नहीं हम पढु न, बट जो माने आंसर ठीक दोछ ता तमे भी पढि के आछो. यू आर नॉट न्यू कमर. और सेडा ही एक्चुअली हम करूछु. तमे पढि के आसले ना तुमको एडी कोन होला तम रिवीजन हे गेला आउ तुमको किछटा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हे गेला. ओके, एडा यूपीएससी ऑथेंटिक क्वेश्चन. ओके, तो ऑलमोस्ट समस्त ठीक आंसर देछो. देखो हम भूल आड़ जुआ फास्ट रे कि द पावर ऑफ जुडिशियरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. ओके, गिवन अर्लियर सिमिलर डिफरेंट केसेस. एडा जुडिशियल रिव्यू हो. ओके, जुडिशियरी भी निजर जजमेंट को रिव्यू करे, निजर जजमेंट को चेंज करे. ओके, तुम जान छ जो मेनका गांधी केस, गोपालन केस, शंकरन केस जैसे कोन जजमेंट चेंज कर जाय छ माने, बट दैट इज नॉट जुडिशियल रिव्यू. The power of judiciary to review all the legislative enactment before they are assented by the president. It is in India. This is not at all practiced. Okay, इनमें किसी हुए ही नहीं. The power of judiciary to question the wisdom of the law enacted by the legislature. Okay, this is what actually due process of law. In due process of law, मैं तुमको आगे क्लास रे भी कहती
The judiciary will not only look at the procedure, but also it will look the intent of the government. Okay, कि procedure ठीक रहे follow ହେଇଛି ना नहीं, ଆଉ जो law बना है तार intent भी ठीक ଅଛି ना नहीं, whether it is fair and just or not. Okay, whether the law is biased or whether the law is what directing towards any section of the society. So it will check the fairness and the intent of the law. Okay, that is due process of the law. जो रखी इटा कुछ wisdom of the laws enacted by the legislature. Okay, where it will only see the procedure. That is called as procedure established by law. मैं आगो क्लास रे पढ़ है ना. So said actually आम देश रे practice होची by and large. So judiciary is checking the constitutionality of laws and executive orders. Okay, whether the law which has been formulated, whether it is in line with the constitutional provisions or not. से constitution को violate करूची कि जल्दी करूनी तार intent किसी भी ही था. They are not going into the intent of the government. I mean intent of the parliament. Okay, they think कि there is a parliamentary sovereignty also. We are balancing it. But parliamentary intent को तांगे check करना नहीं. Only they are checking whether the law passed by the parliament is following the constitution or not. Okay, so that is judicial review. So answer will be A. Question number 9. Under which schedule of the Constitution of India can transfer of tribal land to private parties of for mining be declared as null and void? देखो same answer वाला question but in different language. Okay. आ पूर्व भी हमें similar answer वाला question कले सेडी तारो question रो demand अलगा थिला. ये demand अलगा but same kind of things. Okay. तुम जानी चाहिए tribal. Okay, so okay. समस्त जानी चाहिए answer हो fifth schedule. Now tell me what is third schedule? Salary allowances. Yeah? Fourth. कौन salary and allowances? Salary and allowances to parliament Supreme Court. Okay. What is ninth schedule? Oath and affirmation क्यों पहले check करी को is it oath or affirmation? Third schedule. हाँ third टा कौन? Third schedule ta oath and affirmation. Oath and affirmation ना okay. तुम्हें कोई वो मन रखी because you are going to write the exam. I am not going to write the exam. Okay. Oath and affirmation, right? Then salary टा को schedule? 2. Second. 2. Okay. जो मैंने कहथिलो सैलरी जस्ट चेक योरसेल्फ बी करेक्टेड. ओके, डोंट कंफ्यूज. एमिति देखो तमरो डाउट क्लियर हुए. जने ना कहला ना तम के बिलीवन. ओके, हां लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करया पई. व्हाट इज 12 शेड्यूल? Municipality. Municipality, right? Yes. Question number 10. What was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁ ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ. किए कहले डी, किए कहछ डी, भोजन कहउछन बी. डी होगा सर. डी ये सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. डी किए कहछ तमे डी बोली. हमें केते नंबर अमेंडमेंट रे ऐड करथिले, कोन ऐड करथिले? 42nd amendment 1976. कोन ऐड करथिले? secular socialist and integrity. Secular socialist and integrity.
तो तो 26 एंड रे कोन रहला सोशलिस्ट रहबोनी है ना सेकुलर भी रहबोनी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सोवरेन डी है आंसर बी लास्ट क्वेश्चन आई थिंक right to vote and to be elected in India is what type of right फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट चैप्टर रे पढिलो एटा थिला कोडी जति तुम पढिली डोंट ट्राई टू बी फास्ट तुम आरंभ रे कहै ट्राई टू बी करेक्ट एक्यूरेट तमे जिते भाबिबो ना कि मु एग्जाम माहौल रे कहूची देन ओनली यू विल बी सीरियस कि तुम जेडू सीखी कि सीरियस कि जीवन देन इट्स फॉर योर लॉस so try to be correct think fundamental right तो हबो ही नहीं फर्स्ट को पहला is it legal is it constitutional it's natural कौन constitutional answer कौन 11C it is constitutional why it is not legal right माने कौन legal right हाँ what is legal right ये जानिछ yes one can sue somebody is writing one can sue if don't get okay तमे you can go and case you can go and appeal okay if your right is violated legally तमे action नहीं परिबो okay then it is legal right okay so here vote and to be elected is not legal okay you cannot sue or you cannot go and file a case it is constitutionally given to you okay जोडी के हमरो even amendment के 60 I think 61 है ना जोडी के हम तार एज कमिशन 21 to 18 करछंदी okay so constitutionally एटा तुमको दिया है छी it is neither legal it is not natural okay it is not fundamental also natural means what by birth you has the right okay so right भी no legal भी no it is constitutional answer mu सबरो दे दी लास्ट रे okay so this is all जदि कार किसी क्वेश्चन अछि पचारो otherwise you can wind up as actually class ठीक टाइम रे सॉरी ची 2 hour we will go like this only okay mostly try करिया 2 घंटा maximum ताटू कम रे भी सारिया पे so that तमे भी बोर होबनी और फ्रूटफुल भी होबो जाकू किछि पचारिया नहीं you can leave जदि का किछि पचारिया अछि तमे रहि पारो जदि किछि तमे पचारिया नहीं you can leave okay don't waste your time और समस्त को थैंक यू कमेंट करिके जणेबो तुमको क्लास केमिति लागुची ओके सो दैट विल इंप्रूव तुमको क्लास जदि ठीक ठाक लागुची नाही कोन तुमको देन यू कैन इंप्रूव ओके एंड एमिति रहबो सेशन डोंट एक्सपेक्ट कि आई विल कम एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग बाय एंड लार्ज आई एम एक्सप्लेनिंग लॉट ऑफ थिंग्स ओके मोस्टली एते जिंस भी तुमको एक्सप्लेन करबनी वी आर